external environment. The next thing we studied is that why we need homeostasis. And the answer was simple, because we are willing to survive in some drastic conditions, or you may say in some favorable conditions. So we need homeostasis to survive. Second, we studied about different examples, including temperature regulations, maintaining water level inside the body, and blood glucose level. Etc. So now we all know that homeostasis plays a very crucial and important role in maintaining everything which is running inside our bodies. Now, we have a case study here. You know, in 1980s, there was a disease, cholera. That was an endemic, and many people die of this disease. And now we know what is cholera. It is an excessive vomiting and excessive diarrhea. What happens after excessive vomiting and excessive diarrhea is actually you lose a lot amount of water. And when you lose a lot amount of water, your water level in the blood, or you can say your blood volume reduces. And in this way, the patient may get a heart attack, or it may get a kidney failure, and this is the way he dies. So in these days, whenever we get food poisoning or cholera, you know, we are being adjusted to, drips and various other liquids, so that we are being able to complete our water levels. Anyways, today's topic is the mammalian skin. You know, we are the master creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we talk about homeostasis, skin is the most crucial part, because skin is something that separates the inside of our body from the outside environment. So it is a protective layer. Second thing, it acts as excretory organ. Third one, it regulates the body temperature. Okay, anyways, how it is a protective layer? Because it separates the internal environment. Separate the internal environment, or you may say it is semi-permeable. Sorry, it is not permeable. The second thing, our skin acts as an excretory organ, and we all know the excretion is in the form of sweat, and sweat contains various waste materials. And the third one, it regulates body temperature. We all know when we are in a temperate region, when we are in a hot room, so we start to sweat. And sweating is in response of when our body temperature rises above the normal limit. So we start sweating, so that when that sweat evaporates, our body temperature comes to the normal level. Okay, the next thing, our skin have a lot of nerve supplies, and blood capillaries.
This was a simple introduction that how our skin works in homeostasis. Next is structure of skin. Okay, I'm going to draw the diagram, and this diagram is very important according to your CAIs. So you have to memorize how to draw this thing. Okay, here's our hair. Okay, next thing is blood capillaries. The sweat gland, or you can say sweat pore. And beneath that, there's a fat layer. And we also have some nerve endings. Okay, now the actual procedure, or you can say the skin consists of two parts. Two parts. The upper one is epidermis, and lower one is dermis. This one is epidermis and lower one is dermis. Epidermis consists of three layers. The first layer is cornified layer. The topmost skin of our body, the topmost layer of our skin is the cornified layer. It is made up of dead and dry cells. It is highly protective, and it forms a barrier between the internal and external environment. The next part is granular layer. And the third one is malphizian. Okay, what actually happens here? This three layers makes up the epidermis. Starting from the malphizian layer, this layer, the malphizian layer, there occurs a cell division. There's a constant production of new cells of our skin, and these new cells are next pushed to the granular layer, and in granular layer, the new cells stay for some time, or you can say they develop there, and then furthermore, from the granular layer, the new cells are pushed to the cornified layer, the uppermost skin. And you know what? Every day we lose millions of new cells, millions of old cells, sorry, millions of cells from our skin, which are rubbed off, and new cells take their places. Okay, next thing is, next layer, the blood capillaries. Okay, blood capillaries have a very crucial role in our skin.
like they perform the function of vasoconstriction and vasodilation. Another important thing, in the blood capillaries, in our skin, we have a vasomotor nerve. What I actually meant to say, just take an example. अगर हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया और उसको मेंटेन कैसे करना है, वो मैसेज किस तरह से जाएगा. वी ऑल नो इफ आई एम टचिंग ऑन माय हैंड, तो ये मैसेज थ्रू नर्व्स मेरे ब्रेन तक जा रहा है एंड आई नो कि मैं अपने फिंगर से इसे टैप कर रहा हूं. तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, सो देयर इज अ वैसोमोटर नर्व व्हिच टेक्स द मैसेज फ्रॉम द स्किन टू द सीएनएस, ताकि हम ये डिसाइड किया जा सके, हमारा सीएनएस या करेक्टिंग मैकेनिज्म ये डिसाइड कर सके कि हमने वैसो कंस्ट्रक्शन करनी है या वैसो डायलेशन करनी है. एंड वी ऑल नो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि वैसो कंस्ट्रक्शन कब होगी. वैसो कंस्ट्रक्शन होती है जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. इन अ कोल्ड वेदर वी डू वैसो कंस्ट्रक्शन, और वैसो कंस्ट्रक्शन में हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है उसके अंदर. एंड व्हेन ब्लड फ्लोज फास्ट, तो वो फ्रिक्शन से और रेजिस्टेंस से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. द नेक्स्ट थिंग वी डू व्हेन देयर इज वैसोकंस्ट्रिक्शन इज शिवरिंग. हम शिवर करना शुरू कर जाते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर. एंड दिस ऑल द टैक्टिक्स आर इन द होम्योस्टैसिस, एंड ये सब कुछ किया जाता है बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव. द नेक्स्ट थिंग इज वैसोडायलेशन, और वैसोडायलेशन वी ऑल नो इन द समर्स हमारा पसीना बहुत निकलता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वैसोडायलेशन. आपने देखा होगा समर्स में हमारी जो ओपन पोर्शंस हैं स्किन के, उसमें हमें वेन्स बड़ी प्रॉपर्ली नजर आ रही होती हैं, एंड इट इज बिकॉज कि विद देयर इज वैसोडायलेशन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा होता है. एंड उस कांस्टेंट इंक्रीज को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सो उसको मेंटेन करने के लिए वी नीड वैसोडायलेशन. सो ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, हमारी वेसल्स ओपन हो जाती हैं. जब ज्यादा फ्लो करेगा, अब फ्लो करने पे नेक्स्ट चीज क्या होगी, हमारी स्वेटिंग. स्वेटिंग से जब ये स्वेट इवेपोरेट करेगा, देयर विल बी अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उससे हमें कूलिंग सेंसेशन मिलेगी. एंड दिस इज हाउ वी मेंटेन द टेम्परेचर, एंड दिस इज हाउ आवर स्किन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज, okay, now listen, this is very important. These blood capillaries, yes, they are running to the skin. These blood capillaries also form a link with the hair and to the sweat gland. अगर मैं सिर्फ हेयर की बात करता हूं, सो हेयर कह लें कि एक एक्सटर्नल पार्ट है हमारी स्किन का विच गोज आउट ऑफ द स्किन. और हेयर्स का बेसिक रोल क्या है? हेयर्स एक्चुअली परफॉर्म अस, गिव अस अ कुशन, एंड इट सपोर्ट अस इन एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी. सो बेसिकली हेयर्स हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. एंड हाउ हेयर ग्रोज, द क्वेश्चन इज हाउ हेयर grows. So the simple thing, आप ये देखो इस बाल के स्ट्रक्चर को, it goes down down and down, and यहां पे एक हमारे पास आएगा hair papilla. Hair papilla. अब कह लो कि hair papilla, for example, if I say that this is the hair papilla and ये नीचे उसके हमारी blood capillary होती है. There's a नहीं, hair papilla नहीं, हमारी hair की जो root है, this is the hair रूट, और ये नीचे ब्लड कैपिलरी. तो दरमियान में जो स्पेस आपको नजर आ रही है, दिस इज हेयर पेपिला. होता अब क्या है कि हमारी इस ब्लड के अंदर, जो ब्लड यहां से पास कर रहा है, इसमें से सारी न्यूट्रिशन जो भी हम खा रहे हैं, जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन्स हैं, वो सब के सब यहां पर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. देन यहां पर न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स, और ये न्यू सेल्स कॉन्स्टेंटली जस्ट लाइक दिस, जिस मेल्फिजियन लेयर में न्यू सेल्स बन रहे हैं और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट यहां पर भी हेयर पेपिला में न्यू सेल्स बन रहे हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सो दैट आवर हेयर ग्रोज. ओके, नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ स्वेट पोर. स्वेट पोर, जहां से पसीना निकल रहा होता है. एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग इन समर्स एंड विंटर्स. समर्स में जब हम कभी लाइट चली जाती है एंड वी आर इन अ रूम, इन अ क्लोज रूम जहां पे हवा भी नहीं आ रही, तो देयर आर स्ट्रीक्स ऑफ स्वेटिंग. बहुत ऐसे आपको प्रॉपरली ऐसे ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होंगे. पर इन नॉर्मल डेज, इवन व्हेन वी आर सिटिंग इन अ एयर कंडीशन रूम, हमारा स्किन नॉर्मली वेट होती है एंड स्वेटिंग हर वक्त चल रही है.
और स्वेटिंग हमारा ज्यादातर वाटर लॉस होता है वो स्वेटिंग की वजह से ही हो रहा होता है. अच्छा, द क्वेश्चन इज कि स्वेट में वो जो वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है ये कहां से आ रहा है? ये वाटर हमारा ब्लड से आ रहा होता है. बेसिकली हमारे जो स्वेट पोर है इट इज लिंक्ड टू द स्वेट ग्लैंड एंड इट एक्सट्रैक्ट्स ऑल द वाटर फ्रॉम द ब्लड. एंड इन दिस वे in summers when we are fasting we face severe water loss, we face severe water scarcity. And next thing is you have heard about hair follicle. जो कह लो कि हेयर बनने से पहले इफ दिस इज द स्किन, तो स्किन के अंदर जो रिज बनती है, जो उसका इनवर्ड मूवमेंट है और उस इनवर्ड स्पेस के अंदर जो बाल उग रहा है, जो बाल ग्रो करता है, तो उस स्पेस को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं. अच्छा, जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है सो बेसिकली वो क्या करते हैं, उस हेयर फॉलिकल को अलॉन्ग विद दैट रूट, उस रूट के साथ उसको निकाल लेते हैं. और खाली रूट नहीं निकाली जाती, नीचे से ब्लड कैपिलरी को भी हर्ट किया जाता है, उसका एक पोर्शन लिया जाता है साथ में, क्योंकि जब उसे दोबारा किसी नई जगह प्लेस किया जाएगा तो वो ब्लड कैपिलरीज वहां की प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज के साथ ज्वाइन की जाती हैं सो दैट वहां पे हेयर नया ग्रो करता है. अच्छा, हमारे हेयर्स के साथ एक चीज आपने नोटिस की होगी, हमें हर वक्त जब भी पसीना आता है तो हमारे स्किन शाइन कर रही होती है, चमक रही होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स. हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. And these are the sebaceous glands, and they play a very important role. Sebaceous glands actually antiseptic के तौर पे भी काम करते हैं. इवन हमारी स्किन से जितने भी सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल्स सिक्रीट हो रहे हैं वो हमारी स्किन पे स्प्रेड कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब भी हम वर्ड यूज करते हैं एंटीसेप्टिक का, सो एंटीसेप्टिक मीन्स it prevents us from the microorganisms, or you can say it kills the microorganisms. But the prevention, the word prevent is more accurate. Okay, and in the last layer we have two things. The first one is adipose fat layer, and the next thing is our nerves. This is a pressure nerve, pressure receptor. The other one, touch receptor. And free nerve endings. In yesterday's lecture, we studied about stimulus and receptors. You know what actually happens? जब हमें कोई touch कर रहा है, so definitely there are touch receptors. तो वो receptors अगर होंगे तो हम decide कर पाएंगे कि who is touching. और किस सेंस किस नोयत का टच किया जा रहा है. एक टच थप्पड़ वाला भी होता है, सो वी क्लियरली डिफरेंस कैन क्रिएट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ थप्पड़ एंड अ सिंपल टच. सो एंड देयर आर सम प्रेशर रिसेप्टर्स. आपने कभी देखा होगा, यू मे हैंडशेक विद समवन एंड दे ग्रैब योर हैंड लाइक और दे आर गोना ब्रेक योर हैंड. Okay, the last thing is adipose fat layer. This fat layer is also serves a protective function. Adipose fat layer technically आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इन सच ए वे कि वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं. आपने देखा होगा जब हमने लास्ट टाइम पेंगुइन्स की एग्जांपल दी थी, तो पेंगुइन्स के पास फर नहीं होती, जस्ट लाइक पोलर बियर्स दे हैव अ वाइट फर. सो वो फर उनको उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, उनकी बॉडी की हीट को कंजर्व रखने में हेल्प करती है. So हमारे स्किन में adipose fat layer maintains our internal body temperature. कह लो कि it's like a blanket. हम ये blanket पहने होते हैं so that हमारी बॉडी का internal temperature ज्यादा expose नहीं होता और बॉडी से ज्यादा बाहर नहीं निकलता. And that's it. This is for the day, and I hope कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लाजमन करनी है. एक इस डायग्राम की प्रैक्टिस, इस डायग्राम की प्रैक्टिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, there is a 4 mark question in which you have to draw the diagram. और जब डायग्राम ड्रॉ करनी है, you also need to know the labels. So we know कि जब हम एपिडर्मिस की बात करें, स्किन में 2 लेयर्स हैं, the epidermis and the lower one is dermis. So epidermis में 3 लेयर्स हैं, cornified layer, granular and malpighian layer. Cornified layer सबसे ऊपर वाली which is the dead layer, एंड हमें जो बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल हार्म से, तो इट इज अ कॉर्निफाइड लेयर.
उसके नीचे हमारे पास ग्रेनुलर है और मैल्फिजियन लेयर जो कि कॉन्स्टेंटली न्यू सेल्स बना रहे हैं और वो सेल्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं. कह लो कि इट्स अ बैक स्पोर्ट. बट अगर आपसे पूछा जाए कि स्किन के अंदर न्यू सेल्स कहां बन रहे हैं, सो देयर आर 2 पॉइंट्स. एक मैल्फिजियन लेयर में न्यू सेल्स बन रहे हैं और दूसरा हमारी हेयर पेपिला में. Next thing, we have blood capillaries, which perform vasoconstriction and vasodilation, and we all know what is that, and how sweat is produced, and that's it. Thank you so much.